T23 World Cup, when Rohit Sharma was fearless, you got the runs out of him. But when Rohit Sharma is timid, you don't get anything out of him. Remember the 2022 World Cup for that matter in the Australia and in Australia, and we did not get anything out of Rohit Sharma because he was extremely tentative. I think he's thinking a bit too much at the moment. Like the captaincy snatched away, and the team got divided. Now the next year IPL mega auction is there, and now and today only I read a statement that he wants to play another couple of years. Like I don't get this. Now you're 37, you'll be 38 in the next year. Why you're playing so much? See, my point will be is completely different. See, Australians, Michael Clark got retired when he was 34. Watson was retired in 35, 36. But that's why Australia won so many World Cups after that. They won in 2023, 2021 World Test, 2023 World Test Championship final, that UK, and then Yeah, ODI World Cup. Their players though went to retire, and our cricketers, like, no, he's in the form of his life at the moment. yeah, But you have to give chances to other cricketers also. No, how will your team develop? absolutely. I agree with you. I agree with you on this point. So far, I mean, Arshad Khan's over has been doing pretty decent. I felt first four balls, 7 runs conceded. You got a streaky four. I mean, I won't really blame Arshad for that. He's bowled really well. He's kept in a very tight channel as well. Uh, I mean, once again, right, the challenge against left arm seam is going to be an issue for Rohit Sharma, and we have a predictive question as well whether Mumbai can score 24 runs or not at the end of 3 overs. What you think that's a possibility? 24 runs? I personally think it is. 24 runs in Wankhede should be a cakewalk in the first 3 overs. Yes, yes, definitely they can go for it because see, Dewald Brevis is there. He's the next South African big thing, and he's Yeah, got a very just short. talking as you mentioned the big thing. Do you reckon he's not really reached his potential? Because when he came out of the burst out of the season 2021, what was he called as a junior baby AB, right? That's what he was called Junior as. baby. Yeah, Yeah, yeah. but now the last 3 years has really gone down, you believe, because Tristan Stubbs has certainly overtaken him. Christian Stubbs, like I don't understand, like what the scouting and MI owners like they decide, uh, like Hardik Pandya, they made Hardik Pandya bat as a finisher when he Ooh, was that was a close what do you call. call, he batted number 3 for Gujarat Titans. Yeah, He's someone who he needs time before he can unleash the attack on the opposition. And now they made changes like anything. Like where is Rahul Chahar gone? Mayank Parkande? Who are these guys? Naman Dheer, Nuwan Tushara. See, next year when you had the mega auction, no, you could have planned for it for a 3 year gap. But yeah. when you are doing for this, it's a do or die, like no, you made a big decision. Like you said, Rohit Sharma, you take a back seat. We want Hardik Pandya to be the leader. So you Yeah. should have the team like that. No, I don't Yeah, understand the logic. I personally think, see, the team was really good, right? At the start of the season, if you would have asked me, that team deserved to qualify for the playoffs, just on paper, because they had the right balance, 7 overseas, top class Indian batters, good mix of overseas fast bowlers, and Jasprit Bumrah was of a whole nother level. I think the captaincy plus players going out of form, Surya's injury, everything collided, and this team has really derailed. Possibly worst ever season for a team with such a good squad. I mean, trust me, with that squad, you're telling me that they are the 10th in the table. I would have never bought it at the start of the IPL. But yeah, this is what it is, right? At the end of the day. नहीं उनमें बहुत सारे इंटरनल इश्यूज थे मतलब इवन माइकल क्लार्क Mm. शेन वॉटसन दे सेड दैट द टीम इज डिवाइडेड लाइक Absolutely. रोहित शर्मा भी अच्छे से बात नहीं कर रहे थे हार्दिक पांड्या से लाइक इन द फर्स्ट आपने फर्स्ट मैच में देखा ही होगा हार्दिक पांड्या मेड रोहित शर्मा गो एट द बैक uh, do the fielding at long off. So the entire race was there from the MI family. Like it's a global franchise, right? It's not like Yeah. only like a, what you call like a Punjab Kings or any small franchise. They have very huge fan base, like. Mm. बट अच्छे से नहीं हुआ, Agree. मैनेज नहीं हो पाया गुजरात, Absolutely. सॉरी मुंबई इंडियंस से. Absolutely. Here, there's a positive matchup here. Negative matchup for Rohit Sharma. Matt Henry was Rohit Sharma. Matt Henry has troubled Rohit Sharma over the years. And once again, it's going to be very interesting to see with Wankhede. If Matt Henry pitches the ball right up there, there could definitely be an opportunity where Rohit Sharma might just push at it. And there could be an opportunity, I believe so. Looking at this game, 9 runs at the end of 1.1 overs. What do you reckon could be an ideal power play score here? Because we've asked a question for 3 overs 24, but chasing 215, you can say it's Wankhede. You might say Surya come and save you, etc., etc. But in all honesty, uh, you really have to up the run rate. लाइक आई वुड से लाइक मुंबई इंडियंस को 70 से 80 रन तो बनाने चाहिए. लाइक मेक द मोस्ट ऑफ द पावर प्ले ओवर्स बिकॉज सी Yeah, दे हैव गुड कृणाल पांड्या,
they have got pretty, and that's a 6 if I'm not wrong. And क्या shot मारा है फाइनली द पुराने रोहित शर्मा दिख गए, थोड़ा अच्छा लग रहा है, वर्ल्ड कप पास में है अभी, लाइक गुड पुल शॉट। एंड एक्चुअली उन्होंने डीप मिड की तरफ मारा है, मतलब इट्स नॉट लाइक ही वेंट विद द फ्लो विद द बॉल। Yeah, I mean that shot is great. That's a brilliant shot. Ultimately, that's classic Rohit Sharma shot. I hope he continues because Rohit Sharma will have to continue playing like this. As you mentioned, 80 runs at the end of power play would ideally be the perfect start they would have wanted. But having said that, Rohit Sharma has looked good, right? In last what 5 seasons of IPL, he's played these shots every now and then, but has given away those starts. He scored those brilliant 20s and 30s, but never those big scores of 70s and 80s leading Mumbai Indians home. उनकी टीम काफी ज्यादा डिपेंडेंट है सूर्य कुमार यादव पे। लाइक रोहित शर्मा तो फॉर्म काफी टॉक्सी टवी रहा है, एंड दैट्स अ वेरी गुड शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में। ही मेड रूम, ही गेव रूम टू हिमसेल्फ। और क्या शॉट है यार कसम। Brilliant shot. I mean, absolutely cracking shot here from Rohit Sharma. I mean, let's be honest. This is Rohit Sharma looking good. We don't want to jinx him. Hope he continues playing he like this. And he's taking on a negative matchup against him, right? I just mentioned about how there's Matt Henry's negative matchup. That's 2 sixers in this over already. Now you are on with the net run rate. And I think there's such a big innings for Rohit Sharma himself to prove a point. लेकिन अवेल आपको नहीं लगता कि बीसीसीआई ने मतलब अभी वैसे भी ये मैच में कोई मतलब देयर इज नो यूज ऑफ दिस मैच, लाइक बोथ द टीम्स आर आउट ऑफ द प्लेऑफ्स रेस, लाइक बुमराह, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, दे कुड हैव बीन सेंट टू यूएस इमीडिएटली, राइट? एंड वेस्ट इंडीज। I don't think they planned. I think I found it very puzzling that the first flight is departing on 25th or 24th of May, right? If I'm not wrong. So that's weird. I mean, yeah, you rightly mentioned they should have actually gone. Like for example, teams like Sri Lanka have already reached there, and if you're really looking to win a World Cup, you can go out there. Rahul Dravid is anyways free. Maybe right after this match, at least, some of the players could have gone and practice in those wickets in New York and how those wickets will behave. Because let's be honest, there's a lot of players who are not going to make it to the playoffs who will be part of the World Cup team, right? For example, Arshdeep Singh's, the Punjab team players, the Mumbai team players. Lucknow, we don't have a lot of players. I don't think we have any team players from Lucknow. But Delhi, yes, we do have Rishabh Pant, etc. So yeah, you're right, man. I mean, I personally would have wanted them to go early and then let the guys who play the IPL playoffs join you after the final. That would have been the ideal mix. यस, और देखा जाए ना न्यूजीलैंड की जो प्लेयर्स है माउंट माउंट गाने में प्रैक्टिस कर रहे हैं Gary Sturt के साथ, मतलब इंग्लैंड क्रिकेटर्स हैव फ्लॉन बैक टू इंग्लैंड, देयर इज अ स्मॉल प्रिपरेटरी कैंप। लाइक ऑस्ट्रेलियंस की जरूरत तो नहीं है, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क और डैनियल वेटर या जॉर्ज बिले तो हमेशा टच में, उन्होंने कहा भी था कि वी गाइस विल बी इन टच फॉर द T20 वर्ल्ड कप। लेकिन लुक एट दिस गाइस, नो मैन, लाइक इवन सी पाकिस्तान, दे हैव अ प्रिपरेटरी कैंप इज गोइंग ऑन, लाइक गैरी कर्स्टन इज गोइंग टू बी विद पाकिस्तान फॉर द इंग्लैंड। सो देयर इज अ प्लानिंग, राइट? there is hardly a fortnight for the T20 वर्ल्ड कप, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई प्लानिंग ही नहीं है। वी आर रिलैक्स, Absolutely. मतलब मैं किसी को कुछ नाम नहीं दे रहा, मैं बुरी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा तो भी प्रिपरेशन होना चाहिए था ना। लाइक सी Absolutely. IPL comes every year, but this T20 वर्ल्ड कप, लाइक Yeah. 2022 was quite a humiliation for us, right? काफी Absolutely. बेइज्जती से आउट हुए थे हम, 10 विकेट से हराया था इंग्लैंड Absolutely. ने हमें, और 2021 का तो ग्रुप आपको स्टेज से लगता बाहर हो है गए कि थे। इस बार थोड़ा बेहतर खेलेगा कि आर वी लुकिंग एट द रिजल्ट और द फेथ रिटन ऑन द वॉल मींस you have any high expectations from India looking at the score, looking at the form? लेकिन नहीं यार, मुझे तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कैसा है देखो, हम तो सुपर 8 तक पहुंच जाएंगे क्योंकि हमारे ग्रुप में आयरलैंड है, यूएसए, कनाडा है, इन तीनों को हम आराम से हरा सिर्फ देंगे। लाइक इंडिया पाकिस्तान विल क्वालिफाई। पाकिस्तान को तो बहुत बुरा खेलना पड़ेगा आयरलैंड से फिर से हारने के लिए, बट yeah, दैट कैन हैपन आल्सो, वी कैन yeah, रूल दैट पॉसिबिलिटी। बट इंडिया विल मेक इट टू द सुपर स्टेजेस। लेकिन क्या होगा, लाइक दीस 4 गेम्स विल बी वेरी इजी फॉर अस, बट व्हेन वी एंटर इनटू द yeah, सुपर 8 स्टेजेस, दैट 4 टीम्स, वहां पे लाइक मुझे याद है 2021 में विराट कोहली ने कहा था कि सिर्फ 6 ओवर का हम गंदा खेले थे, बोले it was matter of one bad phase. And Rohit Sharma is also quite similar to Virat Kohli. Like when we lost 2021-23 World Test Championship final, तब रोहित शर्मा कह रहे थे कि यूके में क्यों रखा, बोले फाइनल। Like these captains, no, India के captain, they don't accept their mistakes. And yeah. everyone says that India सिर्फ एक ही गलत मैच खेलकर वर्ल्ड कप जीता, हारा था मतलब।
2023 का, जब ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट रह के मोर देन 6 to 7 रहे थे, लाइक वाओ, वी एंड रोहित शर्मा इज आल्सो रिलैक्स। चलो भाई कोई कुछ नहीं बोल रहा है, एक ही मैच खराब खेले, लाइक 4 साल भूल गए लोग। वी डोंट फॉलो द प्रोसेस। सी इंडिया, Yeah, I agree. आईसीसी इज नॉट, आईसीसी एक 4 साल का टूर्नामेंट क्यों रखता है, 2 साल का We're T20 वर्ल्ड कप क्यों close. रखता है? Yeah, बिकॉज दे I वांट agree. एवरी नेशन, बिकॉज वो चाहते कि हर एक नेशन को एक चांस मिले, एक टीम बिल्ड करे। हम तो करते ही I नहीं, agree. कितना टैलेंट है बस, क्यों नहीं करते? तुम बताओ यार अमित। Absolutely. I agree, man. I'm in total agreement with you. There's no denying the fact that as a country, we should be, to an extent, we should really question the board and the players because you're not delivered, right? I think we've all seen Australian team, they've delivered in big stage. And the big tournaments are all about not having that one bad game when it matters the most. You can't keep saying that, oh, you are the best team in the tournament. Nobody cares of your 10 wins, man. Nobody cares of your 10 wins if you have lost that final. Like that's the bottom line of things. So here we have at the end of 2.3 or 2.4 overs, 23 runs. Arshad Khan is again bowling well. David Brewis is still yet to get off to a big start. 1 run, 4 balls. Rohit Sharma has looked 19 of 12. The predicted question right now is, as you can see on the screen, is definitely whether or not 33 runs can be scored at the end of 3 overs, which is two boundaries from here on, which doesn't look like a possibility. So, but it's a wide here. So, yeah, I mean, either way, so you can go in with a yes or a no for that question. But coming back to our discussion again, today, there's a news going out, breaking right now. Gautam Gambhir has been approached by BCCI to be the coach of Indian national team. How do you see that? नहीं, मत करो उसको कोच, पूरी टीम को झगड़े लगा देगा, पंगे ले लेगा सबसे। नहीं, लाइक व्हेन ही Oh, I वाज mean, इन केकेआर, लेकिन जब वो केकेआर में भी थे ना एज अ कैप्टन, सो वो तो थोड़ा खौफ था उनका, लेकिन नेशनल टीम में नहीं चलेगा वो खौफ। आईपीएल फ्रेंचाइजी क्या, इट्स अ मैटर ऑफ 3 months, लाइक बट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद इंडिया, इट्स अ मैटर ऑफ 7 to 8 months इन अ ईयर। और yeah, नहीं करना चाहिए, और मुझे लगता है सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं गौतम गंभीर को। और हमारे जो प्यारे सेक्रेटरी है जय शाह साहब, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इंटरव्यूज हो चुके हैं। क्रिक बस से उन्होंने खुद की स्टेटमेंट है दैट वी हैव टेकन द इंटरव्यूज एंड नाउ जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्हाट टू कॉल, कहने के लिए कि इन लोगों ने अप्लाई किया है। जस्टिन लैंगर ने भी कहा कि मैं चाहता हूँ, मतलब उन्होंने अप्लाई किया है। टॉम मूडी है, टॉम मूडी को भी नाम है, एंडी फ्लावर है, इवन स्टीफन फ्लेमिंग फ्रंट रनर कहते हैं। दिवेश लक्ष्मण ने तो नहीं नहीं बोल दिया, मैंने आरा बोलकर, राहुल द्रविड़ बोल रहे मुझे नहीं चाहिए टब। सो लाइक आई थिंक लाइक इंडिया शुड गो फॉर एन ओवरसीज कोच जो टीम को डिसिप्लिन सिखाए, आईसीसी टूर्नामेंट के पहले से ही टीम बनाए। लाइक सी जी, जी, इस 2024 का जब T20 खत्म होगा 29 जून को, विद इन अ स्पैन ऑफ 6 to 7 months वी हैव गॉट चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान। yeah, वो बात अलग है पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, हमारा सेंट्रल yeah, गवर्नमेंट तो नहीं बोलेगा जाने के लिए, बट लाइक we will find a middle ground and all that stuff, but I'm not going to that, but we have to start a process, right? और yeah, हर साल एक absolutely. टूर्नामेंट है, हर साल टिल 2031 आईसीसी ने कहा है कि इसमें चेंजेस नहीं होंगे। लाइक सब बोल रहे थे कि ओडीआई क्रिकेट खत्म होने वाला है, लेकिन हमने देखा 2023 का वर्ल्ड कप कितना Not अच्छा just गया। that, Bharat, you forgot to mention the big series in Australia at the end of the year. I mean, that's going to decide our fate whether or not we're going to go to the final of the WTC once again. So that's a massive one, right? We are the defending champions of the Border Gavaskar Trophy, and we are going to be going there as two-time winners of Border Gavaskar in Australia. So it's going to be easy. Back to the game again. 25 runs, 3 overs here. Krunal Pandya is here to bowl. How do you see this move? I think it's an excellent move to bring in Krunal Pandya, but it could also backfire if Devol Bruce decides to take him on. मुझसे पूछोगे ना, रोहित शर्मा आउट हो सकते हैं इस ओवर में। कृणाल पांड्या काफी अच्छी तरीके से जानते हैं रोहित शर्मा उनकी वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, एंड ही इज गोइंग अराउंड द विकेट, राइट? Yeah, yeah. Now, right now, he's going down the wicket. Yeah, to Brewis. No, no, Rohit. 3.2 overs, Oh, yeah. 26 runs for the loss of no wickets. और Let's be honest, मुझे I think it's not a bad idea to go with the strategy of Rohit Sharma. And I think Rohit Sharma will look to take on Krunal Pandya, considering the run rate is also, it's not been great. I mean, that one good over from Matt Henry apart, I mean, it's been a very mediocre start from Mumbai Indians, to say the least. लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब एलएसजी का, मतलब इतना अच्छा टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन बाद में लाइक दैट एसआरएच ने दौड़ डाला, मतलब इन 9.4 ओवर्स चीज कर दिया टारगेट। Yeah. मतलब I think आई डोंट for me, थिंक I felt
two reasons. One is, they thought, firstly, coming into this tournament, they lost their overseas fastball and Mark Wood, right? Obviously, Shamar Joseph was never going to be your guy who would come and replace a Mark Wood at that stage. Secondly, losing David Willey as well. Overseas fastball का कमी लगा है मेरे को इस टीम के ऊपर, और ज्यादा क्विंटन डिकॉक का फॉर्म भी ज्यादा प्रॉब्लम में लगा है मेरे को, क्योंकि क्विंटन डिकॉक पिछले साल भी, और उसके शायद पिछले साल या तो 2022 में 500 के 400-500 रन का सीजन देता है हमेशा, बट क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल साथ ऑफ and not trying a Kyle Mayers. Remember last year they were very persistent in going with the Kyle Mayers. यहाँ पे एक अच्छे शॉट डेवल ब्रोवी से 33 at the end of 3.4 overs, big six. As I mentioned, there could be a possibility David Brody will look on take on Krunal Pandya. But yeah, coming back to the point, yeah, this has been my biggest issue. One, overseas fast baller not being there, and opening pair not really clicking, because Quentin de Kock, they really relied heavily on him, which I thought was a little absurd. Kyle Mayers को शायद एक मौका दे सकता था, एक नहीं 3-4 मौका तो दे ही सकता था काइल मेयर्स को, क्योंकि पिछले साल हम सब चाहते थे कि क्विंटन डिकॉक आके खेले, पर इस साल हम सब चाहते थे कि काइल मेयर्स आके खेले, क्योंकि क्विंटन डिकॉक का फॉर्म काफी नीचे हुआ था इस पूरे आईपीएल में। नहीं, मुझे तो काइल में नेक्स्ट क्रिस गेल लगते हैं, मतलब जिस तरीके से उनकी हिटिंग एबिलिटी है ना, लाइक हिट्स वेरी क्लीनली, लाइक द स्वीट साउंड ऑफ द बैट व्हिच कम्स नो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लेग साइड के प्लेयर है, उनके पास ऑफ साइड की भी शॉट्स है, ही गोस डाउन द ट्रैक आल्सो, और ही कैन आल्सो ओपन द बॉलिंग आल्सो, बहुत जल्दी ओवर्स भी खत्म करते। लेकिन मुझे क्या लगता है, पिछले 2 साल में गौतम गंभीर थे ना मेंटोर, और यहाँ पर जर्सी लैंगर को थोड़ा सपोर्ट नहीं मिला, मतलब थे, लाइक मॉर्ने मॉर्कल थे, बट दिस गाइस उनका भी फर्स्ट सीजन था, मतलब आईपीएल में इतने बड़े फ्रेंचाइजी के साथ, तो जी जी थोड़ा बिल्कुल। सा मतलब ऐसा। और मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि I mean, it's raining there on Khede, and they have yeah, pulled on the it is, it promotion. is, it is, it is, it is, it is. Oh my gosh, so interesting. Now what are we gonna see? कल भी शायद मुझे तो बारिश हो लगता है सकता है पासिंग सीएसके शावर आरसीबी है, का गेम में भी। पूरे पासिंग शावर है। पूरे इंडिया में अभी बारिश का माहौल है। हमारे यहाँ आई पर भी होप है। Yes. it's weird, right? I mean, it's rain everywhere. Yesterday there was a wash. There's already been 2 washouts this week, and it rains in Mumbai. So once it's gonna rain in the western side of India, it goes for long. Well, we all know that, and it's not gonna be a passing shower kind of. लेकिन लखनऊ की अगर बात करें ना हम, लाइक केएल राहुल शुड हैव टेकन द रिस्पांसिबिलिटी, लाइक आप पंजाब को भी लीड कर रहे थे, आपको इंडिया का भी चांस दिया था लीड करने के लिए, आप वाइस कैप्टन थे, लेकिन नहीं यार, मतलब वो बंदा कुछ ज्यादा ही मतलब सोचता है, मतलब ऐसा लगता है ओवर थिंकिंग जैसे हम कहते हैं ना, मतलब आई एम नॉट Yeah, ब्लेमिंग हिम, बट देयर वाज टू मच व्हाट यू कॉल हाइप फ्रॉम हिम, I लाइक agree. इंडिया का भी नेक्स्ट कैप्टन बोल रहे थे, फिर बाद में वाइस कैप्टन से छीन ली, अब तो स्क्वाड से बाहर निकाल दिया, मतलब like how the things have changed for him. I mean, I would say, to be very honest, he had his own faith in his hands, right? He just messed it up. Yeah, It's he's not messed it like up. he did not have his own faith. It was unlucky, or some say he had his own faith. He made it a mess, and I think it's justified. I mean, I won't sit here and say, oh my gosh, it's been under. When the squad was announced, I saw a lot of people come out and say, why wasn't he selected? See, in India, 15 players get to play, and even in the 15, you can never be happy with everybody, because everybody is a fan base. There's a KL Rahul fan base, there's a Sanju Samson fan base, a Rishabh Pant fan base, and tomorrow or the other, your favorite player is not selected. I also saw even people asking, where is Jitesh Sharma? Like, did you ever think there could be a Jitesh Sharma debate even No, here? no, no. So that's how it is in India. You're never happy with everybody being selected. Jitesh Sharma is someone who had what 63-run season this whole IPL. So people are still asking for that question as well. So I mean, in India you can never be happy with them. I'm just looking at the weather here, Bharat. Looks like a Actually, passing shot to me, no, like but yeah, you never know. बहुत जोर से बारिश है, इट्स पेल्टिंग डाउन टू बी ऑनेस्ट, बहुत, क्योंकि यहाँ पर मैं औरंगाबाद में हूँ ना, छत्रपति संभाजी नगर में, औरंगाबाद में, यहाँ पर भी मतलब Uh-huh. कभी बादल आ रहे, कभी धूप आ रही है, मतलब मैं एक ही दिन में तीनों सीजन देख रहा हूँ, मतलब अच्छा लग रहा है मुझे। कभी कभी लगता है मैं जुलाई में हूँ, कभी लगता है नवंबर में आ गया। मेरे को लगता है एक पासिंग शवर जैसे लग रहा है मेरे को, उतना भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. इफ एट ऑल देयर इज समथिंग गुड, आई थिंक इट विल बी गुड फॉर मुंबई.
शायद कुछ 15 ओवर का गेम भी हो सकता है if game keeps going till of 10:45. I think is a cutoff for um, getting overs getting reduced as well. So let's see. I mean, so far, and Mumbai का drainage का भी problem रहा है ना पहले पहले. So even if the outfield is wet, I think it's going to take a while. नहीं बट वानखेड़े का अच्छा है, मतलब जो स्टाफ है, जो पूरा मतलब जो लोग संभाल रहे, इतने मुश्किल नहीं जाएगा। एंड ऑल्सो यू गॉट 1 आवर लाइक एक्स्ट्रा आवर, बारिश आ गई तो मतलब अगर 11:30 तक भी बारिश नहीं मतलब रुकती है तो वी आर इन फॉर अ लॉन्ग डिले, राइट? I think we'll be here till tomorrow. हाँ, Until यस। pretty much. Pretty much पूरा दिन यही बैठना लेकिन पड़ेगा. I will talk about. Meanwhile, we पॉजिटिव can न्यूज़ talk एक, about tomorrow's game as well. Bharat, I mean, the build-up is already there, and this is possibly a dead rubber. We all know that, but it is not dead rubber for you guys who are on buy stars right now. Mohammad Shahiki says, brother. Yes, Mohammed, if you want, you can join the call right now and ask us your question. आके कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं मेरे और भरत से. हम बात करेंगे आपसे और कोई भी कल का मैच के बारे में भी पूछ सकते हैं क्योंकि कल एक बहुत बड़ा मुकाबला है आरसीबी और चेन्नई के बीच में. भरत, there's nothing to talk about this game because it's already hyped up as the IPL final before the final. लेकिन वहां पर भी 90% चांसेस है प्रेसिपिटेशन की, सो लाइक 90 से करेंगे 40 हो गया. 5 If you're in Bangalore, like I am, everyone is. So in Bangalore, it's not rained a lot. It's been okay. And one thing I'll tell you about Bangalore, guys, do not trust in the Google weather. That's one thing I'll tell you about Bangalore. Being in Bangalore, जीतने वाला है tomorrow RCB में. कौन जीतने वाला है? अरे वरद, आपको एक सीधे से आंसर देना चाहते हैं आप? I will say, I would want to say rain, but you never know. It could be. I'm gonna say momentum wise, RCB 55, Chennai 45. चेन्नई है वो, दे हैव वॉन मल्टीपल टाइम्स टाइटल्स, उनके पास एमएस धोनी है, स्टीफन फ्लेमिंग है, और विराट I'll कोहली ask का you a नहीं। straight up final question. I'll ask you a straight up question, right? Let's ask the big question already. लाइक Kal, विराट कोहली का फॉर्म, विराट if कोहली का फॉर्म MS अच्छा है। loses tomorrow, is it gonna be MS's last game? Definitely last game. He should not play now. See, I am a चेन्नई सुपर किंग फैन, मुझे चाहता हूँ चेन्नई जीते, एमएस धोनी का भी हो। लेकिन लाइक हमने देखा, रिपोर्ट्स भी आए, एक्सट्रीम स्विमिंग भी कहा कि हम बहुत केयरफुली और स्मार्टली यूज कर रहे हैं एमएस धोनी को। लाइक ही हैज डन सर्जरीज ऑन हिज नीज एंड स्टिल ही इज Yeah. प्लेइंग। लाइक रिपोर्ट भी आए थे कि बहुत सीवियर पेन है, ही इज टेकिंग मेडिकेशंस, इंजेक्शंस Yeah. एंड स्टिल ही इज प्लेइंग। इट्स, आई Mohammad थिंक, Shakir is a Virat Kohli fan. Mohammad, आप हमारे साथ कॉल में जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं और आपके व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं कल के मैच के बारे में. एंड अ गुड न्यूज आई हैव फॉर यू ऑल. आई एम जस्ट लुकिंग एट द वेदर. आई एम जस्ट सेइंग दैट इट इज 30% weather. The rain percentage from 90 has come down to 30, which is good news. All you RCB fans, you're praying well, man. Keep praying. I mean, your prayers have been answered. I mean, अब देखिए भारत, इस सीजन में कोई लक फैक्टर तो चल रहा है आरसीबी के साथ. लेट्स बी ऑनेस्ट. इट्स नॉट लक फैक्टर, दे हैव वर्कड हार्ड। मतलब जब वो एक I mean, what I'm आफ्टर talking ऑल, about, the luck factor over here is the games outside their hand. The games they have had in their hand, yes. नो नो, दे डोंट हैव द मैच इन देयर हैंड बिकॉज़ सी, मैंने जैसे कहा कि एमएस धोनी इज अ टैक्टिशियन एंड नाउ एवरीवन इज स्पीकिंग, राइट? जिस तरीके से आपने देखा होगा, वो जो पंजाब की मैच 160 का टारगेट था, वो तकरीबन इतना रविंद्र जडेजा और एमएस धोनी की जो जोड़ी है, जो क्या बोलते पता नहीं, आंखों आंखों में बातें होती रहती है, लाइक बॉल द शॉर्ट वन, सी दे नो हाउ टू विन, दे कैन विन फ्रॉम एनी Absolutely. पोजीशन। मतलब सिर्फ वो झटका लगा थोड़ा जब शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने सेंचुरी स्ट्रक की, लेकिन Aman लास्ट के says ओवर में RCB जीतेगा. Yes, Aman. I mean, I think so too. RCB जीतेगा क्योंकि it looks like the momentum, the wave is riding RCB. हम बोलते हैं ना, like it's a wave, right, which you ride on, and I think it's gonna be RCB. But yeah, you were continuing, Varad. You can go ahead. लाइक सी दे हैव गॉट अ Yeah, गुड but बॉलिंग क्या अटैक। 18 runs के margin से? That's a good one, huh? That's a good one. RCB जीतेगा, but yeah, that is a question. 18.1 or 18? Yeah, Varad, you were saying. लाइक सी, like MS Dhoni, like he will do anything. Like the final is in Chennai.
लाइक सिर्फ कहने के लिए ऋतुराज कैप्टन है, कैप्टनसी तो एमएस धोनी कर रहे हैं, और ऋतुराज भी टेंशन में आ जाते, पैनिक हो जाते हैं, तो एमएस धोनी बोलते मैं हैंडल कर लेता हूँ, आप टेंशन मत करो, आप बैटिंग करो, अच्छे से खेलो, जी बिल्कुल. एंड दे विल विन इट इजीली. और कितना भी Okay. हो जाए, कितना भी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, अगर 2-3 घंटे नॉन स्टॉप बारिश आ जाएगी. और मुझे आपने देखा होगा अबेल कि बहुत विराट कोहली एक्सपर्ट्स को छेड़ रहे हैं, मतलब स्ट्राइक रेट हाँ. कंट्रोल ठीक है ना, कोई बोल रहा है तो लाइक टेक इट एज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, राइट. So यहाँ मोहम्मद साकिर ने बोला कि 37 रन से विराट भाई से बात हुई है, हो गई है. I think very interesting from Mohammad Sakir. He's really spoken to Virat already. 37 runs is what he predicts if RCB bats first. But yeah, bro. I mean, obviously, if you're an RCB fan, I'm an RCB fan. I don't want to see that kind of a win. But let's not jump the gun. I'll downplay this. If CSK are the favorites going into tomorrow's game, let's, in all honesty, to qualify, that is, maybe as Aman said, RCB might win, but whether or not RCB will win by 18 runs is a question. Now, RCB might win by 1 run also, but that won't guarantee RCB the chance in the playoff because SRH has already gotten their result. But here there's rain going on. Hopefully, if you are an RCB fan, the rain has hopefully been pushed to the western coast, up to the west to Mumbai from Bangalore. And 37 runs से जीतेगा तो मैं पार्टी दूंगा. Wow. Aman has given a straight up promise here to all of you that if RCB wins by 37 runs, party to pakka hai Aman ke side se. So, Walid, you would want a party, right? Or you would want CSK to win? लाइक आई नो सीएसके इज गोइंग टू विन, लाइक देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. मुझे पता है चेन्नई जीतेगा. That is some confidence, bro. I mean, that's crazy. I mean, uh, but yeah, let's see. I mean, let's see. I mean, it's obviously, as I mentioned, CSK are the favorites. There is no two doubts about it. And as Walid mentions, these games, CSK has been there and done it. No, they're like the specialist of knockouts. Like they've been there, they've seen it all. But can RCB turn it around right the wave as I mentioned? It's possible. The rain is getting heavier. It's pelting down right now. Hmm. Whereas कब तक हम रिजल्ट मांग सकते हैं? Like, can there be an over reduction here? I personally think there could be an over reduction if the rain doesn't stop in another 30 minutes. एक्चुअली रेन कब रुक गई थी, एक मिनट, लाइक फ्रॉम दैट वी विल हैव अनदर आवर. लेट मी हैव अ लुक एट. विराट कोहली से बात करा दूंगा टुमारो. यही बुला लेना लाइव पे कोहली को. Like, see, Yeah. the over deduction will start after 11 p.m. Like, the rain came into at 10:05. So we are in a Yeah. long delay. We are in a long delay. Absolutely. But yeah, talking to you viewers once again, this could be one of the Bystars ambassador DK's last game if RCB goes on to lose. He's been a fantastic player in the IPL, played for the last 17 years, different teams. But this could be his final hurrah if hopefully, if you're an RCB fan, you don't want to see DK with the trophy. He's been incredible for RCB since the time he was been bought in the mega auction. And this season, especially, everybody wrote him off, right? Everybody wrote DK off at the start of the season. But for him to come, even to stake a claim for T20 World Cup, that's crazy, right? At the age of 40, being a full time commentator and a part time cricketer. Yeah, Bharat. Yeah. The see Dinesh Karthik, like, जैसे मैंने कहा था, like, give chances to young cricketers. Don't play I mean, now. yeah, obviously. But in IPL, I don't know, man. I just feel in India, it's all been about play, and retire when everybody asks you to retire. It's never retire on a high. It's never been the एक्चुअली culture. We all know that. एक्चुअली इंडिया में नहीं, मैं कहूँगा सब कॉन्टिनेंटल. जैसे आज देखो श्रीलंकन क्रिकेट कहाँ पर है, लाइक महिला संगाकारा और महिला संगाकारा दिलशान, ये तीनों के तीनों, और सना जिसूरिया ऑल्सो ही प्ले टिल 2009-10, राइट. लेकिन आज Yeah, जो 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं हुए हैं. इट्स सच अ ह्यूमिलिटी absolutely. एंड एम्बैरेसिंग थिंग. अफगानिस्तान उनको हरा के चला गया 2023 के वर्ल्ड कप में. Afghanistan ने बहुत सारे teams को हराया. I wouldn't blame that. Afghanistan are a good नो. team, bro. But in my opinion, I just have one thing, Bharat.
Like in India, there should be a paradigm shift in the mindset. Like retire on a high. Like आपने बात किया माइकल क्लार्क के बारे में, एबी डिविलियर्स के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि when एबी डिविलियर्स retired, right, he was on a high. Like if एबी डिविलियर्स was in India, he would have been still playing. Trust me, he's 40, he would have been still playing. But it is what it is at the end of the day. There are very few players in India who calls it a day at 34, 35. It's always been about go, get out, and be out absolutely out of form. Then when all the question marks come against you in terms of you getting thrown out, then you can retire. I think the rain has stopped, Varaz. What do you think? It's still Sorry, raining? what? Rain Can has you repeat stopped? that? Yeah, rain has stopped. But there's a slight drizzle is there. Umpires have came into the ground. And coming back to the question, to your question, like there has to be. आपको पता होगा युवराज सिंह मतलब जो हमारे युवराज सिंह के जो पिता है, जो जिन्होंने कोच किया था युवराज सिंह को, तो अभी परसों उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि विराट रोहित शर्मा 50 साल तक खेल सकते हैं बोले, अगर थोड़ा और फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया तो। मतलब लाइक व्हाई वी वांट टू प्ले एट सो मच लॉन्ग एज रे यार, मुझे समझ में नहीं आता है। टाइम लगता है ना, मतलब ऐसा तो होगा नहीं। अभी देखो अभिषेक शर्मा है, इतना अच्छा टूर्नामेंट गया उनका, ही स्मैशिंग सिक्सेस लाइक एनीथिंग, हैविंग फन विद ट्रेविस है कि अच्छा फ्यूचर इंडिया के लिए। लेकिन अब उनको एक्सपोज करोगे क्या जल्दी से? उनको भी 1-2 साल लगेंगे ना, मतलब पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में, मतलब वो पीछे से अलग रहते हैं, वो पूरा क्रिकेट अलग रहता है। लाइक सी ब्रेंडन मैककलम नाउ ही इज इनटू द कोचिंग सेटअप, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के हेड कोच है वो आज। हाँ, एक जेम्स एंडरसन जैसे एक रहता है जो 41 तक खेल पाता है, और वो भी क्यों खेले वो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट और काउंटी क्रिकेट खेलते थे। और अभी भी रॉब की जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर है, ईसीबी डायरेक्टर, और बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैककलम तीनों आके बैठे, एंडरसन को समझाया, नाउ इट्स टाइम यू टेक अ बैक सीट, हमको 2 साल में एसएस के लिए टीम तैयार करनी है। Yeah, ऐसा I नहीं agree, होगा bro. ना यार। मैं I mean, that's ये नहीं what it कह is. रहा हूँ At the end कि of the day, you need मैं to ये नहीं कह रहा हूँ communicate. कि You need to have that. That's why I feel you need big figures in dressing room, like a good coach or someone who can be very ruthless. You can't get yes mans, and I think that's where we've really suffered in the last few years, especially in ICC trophies more than anywhere else. IPL में चली जाएगा. I mean, IPL anything works. IPL में कुछ भी चल जाएगा, but in international cricket, it'll come down to bite you. And I think the covers are going to be removed now. As I mentioned, which is a passing shower. So hopefully we have no overs being reduced. And I think the outfield is also not looking any bad. So I hope we have a start in another 10 to 15 minutes. क्या लगता है? या हो जाएगा, मतलब लाइक 10:40 तक हो जाएगा। थोड़ा मॉपिंग भी करना पड़ेगा, लेकिन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, लाइक सी ग्रेन स्मिथ रिटायर्ड व्हेन ही वाज इन 2014 में, like when Australia won that test series, he said now it's my time to retire, I don't want to play in 2014. Yeah, And I even agree. when देखो हमारे जैसे राहुल द्रविड़ है जो अभी एनसीए के लिए काम कर रहे हैं, अंडर 19 के लिए, इंडिया के लिए, कंट्रीब्यूट लाइक दैट नो, वो खुशी कुछ और रहती है जब आप क्रिकेटर्स को बनाते हो। ये आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ जाओ। अभी रविचंद्रन अश्विन को एक और पॉइंट मुझे याद आया, लाइक रविचंद्रन अश्विन 2019 से 23 में हार्डली खेले ओडीआई क्रिकेट, लेकिन हमने क्या किया, लास्ट मोमेंट पर आकर चलो अश्विन आ जाओ वर्ल्ड कप की स्क्वाड में। मतलब क्या है ये? व्हाई वी आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस? इज दैट टू मच डिफिकल्ट? मैं Definitely not. आप सोशल मीडिया पर देख सकते हो कि लोग अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए हैं 19 नवंबर 2023। लाइक स्टिल पीपल आर गोइंग थ्रू दैट बैड फेज कि हम क्यों हारे बोलकर। जी जी बिल्कुल. बट I mean, you're मैं spot मैं on in saying आई that. एम नॉट, मैं बीसीसीआई के अगेंस्ट नहीं हूँ। लाइक एवरीवन हैज इट्स ओन रीजंस एंड एवरीथिंग, बट अगर कोई दूसरा बोर्ड इतना सक्सेसफुल हो रहा है, कंपेयर करना है तो ऑस्ट्रेलिया से ही करो ना यार। व्हाई वी आर कंपेयरिंग विद पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मतलब ऐसे नहीं करते हम कंपेयर। हम हमेशा इंडिया पाकिस्तान ही करते रहते, श्रीलंका। करना है तो ऑस्ट्रेलिया से करो ना, छोटा सा Yeah, देश you're है right. You're उनका। absolutely right. You're absolutely मतलब right. Because I don't think मतलब at the end of the day, your मतलब competition has never been Pakistan in the last 10 years. हाँ, Your कभी भी competition has नहीं। always been Australia. Your competition has और always been England. इंग्लैंड, और ऐसा नहीं है कि कोई भी बोर्ड साफ सुथरा है, हर एक बोर्ड के इश्यूज है। लाइक इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इज गोइंग थ्रू दैट रेसिज्म वन, यॉर्कशायर का पता होगा अपना, सईम Yes. रफीक का, लाइक स्टिल लाइक वो कर रहे हैं ना, कोशिश तो कर रहे हैं ना। सस्पेंड Yeah, कर दिया absolutely. यॉर्कशायर क्रिकेट को, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के भी इश्यूज चल रहे थे बीच में।
Like जी बिल्कुल. when Warner और जॉनसन झगड़ रहे थे पूरे Absolutely. सोशल मीडिया पर, Absolutely. बट स्टिल कुछ हुआ क्या उनका? पाकिस्तान को हराया, वेस्ट इंडीज से अगेंस्ट, ठीक है, वेस्ट इंडीज से अगेंस्ट वो शमाल यूसुफ की स्पेल की वजह से जीते, बट दे वॉन इन न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज. लाइक दे हैव, लाइक कुछ भी हो जाए, फील्ड के बाहर कुछ भी हो जाए, हम वी विल सॉर्ट इट आउट. हम लड़ झगड़ कर लेंगे, लेकिन जब फील्ड में होते, मुझे युवराज सिंह का अभी उनके जो है ना रणवीर विद अलावादिया को जो करते, पॉडकास्ट करते, मैंने देखा था इंस्टाग्राम पर. तो उन्होंने भी ये कहा था कि हमारे टाइम पर भी विशेष हुआ करते थे, लेकिन जब हम फील्ड पर आते थे तब वो देश के लिए खेला करते थे, लेकिन यहाँ पर तो होता ही नहीं है कुछ. अब कितने Absolutely. रीजंस देते हैं यार, मतलब विराट कोहली की कैप्टनसी मुझे ऐसे लगता था, मतलब वाओ, दिस गाय केयर्स ओनली अबाउट द फ्रेंचाइजी क्रिकेट. Reasons, matlab, he's an expert in giving reasons while playing for the national duty. Absolutely. I agree, man. I mean, you're spot on in saying that, and that's one of the reasons why we've really lagged behind in terms of trophies with some big teams out there. But I am hearing there could be a match start at 10:50, so I think we'll rejoin the live. We'll restart the live at 10:50 again, another 25 minutes from now. What say, Walid? We'll be back in 25 minutes. Thank you, viewers, for watching this. So we'll be back live by 10:50 once the match resumes. So Okay. possible restart at 10:50 if there is no further delay in rain. Otherwise, we'll rejoin whenever the game starts. Have a good time, all of you. See you guys very soon. Bye. Yeah, see you soon. Yeah. Bye.